Hello and welcome to this session of Path to Abundance live show, where today we will be discussing an important topic which impacts our life, which impacts our journey, which impacts our destination. हमें पता नहीं होता कि हम जो लिख रहे हैं, whatever we are writing, how it is subconsciously rooted with our brain, कि इसके neurological patterns कैसे बनते हैं. And thanks to all the people who have joined us on Facebook, YouTube, and LinkedIn. And I'm grateful, thankful that you have joined. So today we have a special guest, Arpita Mukherjee ji. She is a very renowned person and she has done so much work. And she will give her intro because see what happens now when the other person gives the intro, that charisma, that energy doesn't come. But if the same person gives the intro about yourself, herself, then it's simply magical. So let's welcome Arpita ji. So Thank you, hello, Raviji. Arpita ji. Thank you, Raviji, for your kind words. Blessed evening, everyone. I'm Arpita Mukherjee. I'm a master practitioner of graphology and a self-relationship coach. I help individuals to break their old identity pattern that stuck them into self-doubt or broken self-confidence and emotional loop, which is a toxic one, and the Hmm. physical and emotional pain. I am on Hmm. a mission to help individual to gain the personal and professional success. But not just only that, I also want to create a ripple effect in their family and society and in the generations. Thank you, Hmm. Raviji, for giving me this space to share my mission with all of you. Thank you Yeah, so much. Thank you. Thank you for accepting my invite also to come to thank the you. this My session, pleasure, this sir. show. And see, my whole endeavor, my whole effort is to tell the people what so many new things, new technologies, new cheese, new information are available in the market. People are not aware. People think only medicine is available, doctors are available. There is no alternative medicine. There is nothing available in the market which we cannot utilize. So my whole dream, my whole endeavor is to inform everyone. So Arpita ji, just how many years you have been doing this graphotherapy? It's more than a year, Raviji. It's more than a year. Yeah. Okay, great, wonderful. Yeah. And So, and I just how, wanted to say something here. You said yes, that you use the term new. yes, Graphotherapy, graphology is not new. It is okay, very, very old science. But okay, but we haven't utilized it at the fullest. जितने पोटेंशियल इसमें है वो हम लोगों ने अभी तक नहीं किए, इसीलिए अभी भी ये साउंड न्यू लगते हैं, लोगों को लगता है कि ये क्या है, बट ये yes. बहुत रूटेड इनटू बहुत बहुत पुराने साइंस है And ये. how old it is? I think we can go more than around 150 years, sort of, what I can remember. Okay, 150 years. Wow. So what made you choose? Earlier, what you used to do? How you moved into this? You are into this full time? Yes, I'm doing it now. Full time. So Yeah. what you was doing earlier, and now what? How it made you to transition to this as ओके. a full time? तो ये रवि जी, ये सवाल जब होता है ना, तब सब लोग को लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी जाके Yes, ये ऐसे ये हुआ है. बट फॉर मी, yes. everything was going very smooth. Okay. My life was going very smooth. Not such a big challenge, what I could say. ऐसा कुछ नहीं था. बट Hmm. मुझे अंदर से एक चीज लगता था कि देयर इज समथिंग व्हाट आई शुड डू, and there Hmm. is some purpose I have, Hmm. and I need to find it out what. So Hmm. ऐसे ही time पे I just came across the graphology and graphotherapy, these things, Okay. and Okay. I just a curiosity, nothing else. Okay. To be very Okay. honest with you, it's a curiosity कि ये है क्या. Okay. मतलब मुझे जो याद है कि मम्मी बताया करती थी कि हैंडराइटिंग खराब हो तो यू आर अ बैड पर्सन फ्रॉम इनसाइड, दैट्स व्हाई योर हैंडराइटिंग इज बैड. तो वो ही दिमाग Yes. में था. तो जब Yes. ये पता चला, सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर व्हाट इज दिस, नथिंग, नो Okay. अदर इंटेंशन आई हैड दैट टाइम. But Okay. when I enrolled to the academy and I started exploring and learning, then Hmm. it
opened a new world to me. I am a Okay. very self-aware person, but I realize there are a lot of things I don't even know about myself. तो वो सब एक एक करके, और तब लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे हैंडराइटिंग के स्ट्रोक से मुझे इतना कुछ पता चल रहा है. और वो जब पता चल रहा था, एंड आई वाज लर्निंग दैट if this stroke goes this side, what does that mean? If this goes this side, what does that mean? And the more, one day I realized from my handwriting, I can read my life journey. Wow. Because maybe 10 years ago, what I used to write, yes, I was in that kind of mindset. But in the last 10 years, I have came across a different path and different thing. So my handwriting changed. That Okay. blew my mind. कि यहाँ पे तो कुछ Okay. है. कि I can read my entire life journey through my previous notebook and now current books. So I can Okay. clearly see that. सो अलॉन्ग Okay. विद दैट, जब फिजिकल चेंज मतलब हेल्थ में इम्पैक्ट करना शुरू किया, मतलब हेल्थ पे इम्पैक्ट, मतलब आई स्टार्टेड गेटिंग द बेनिफिट्स ऑन द हेल्थ लेवल. तब मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ है जो मुझे करना चाहिए. एंड दैट आई गॉट द कॉलिंग सॉर्ट ऑफ, यू कैन से दैट आई शुड डू समथिंग हियर. बिकॉज we are totally dependent on medicines this generations, or people are like ऐसे ही ऐसे ही मेडिसिन खा रहे हैं. मतलब Yes. बीमारी कम नहीं है और मेडिसिन भी कम नहीं है. हम लोग Yes. क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तब लगा कि Yes. यहाँ पे दिस इज द, आई फाउंड इट्स द easiest and fastest way to rewire your subconscious mind and deal with your physical and mental behavioral challenges. Challenges in the sense that what are the obstructions you are having, you can deal with it. It's very easy. तो तब लगा कि I should do something here, and that is how I came into this thing. Okay. So you told that abhi ke we can rewire our brain, we can rewire our thing. So Right. what are the methods are involved in this? कि हम इसको करते हैं. So people don't have. Can you please explain in detail कि what is the method and what is the process to do it? Okay. So graphotherapy, what we call, that's graphology, जो हम लोग handwriting पे analysis करते हैं, या और भी बहुत कुछ रहते हैं graphology के अंदर, but ये healing रहते हैं जो graphotherapy होता है. तो graphotherapy it works on the neuroplasticity. तो आपके brain से एक signal आती है. मतलब आप समझो कि आप एक पेन पकड़ के आप लिख रहे हो. आप कैसे लिख रहे हो? ये आपके ब्रेन आपको सिग्नल भेजते हैं. आपके ब्रेन से कैसे आपको ये हैंड मूवमेंट करना है, कौन सा क्या लिखना है. तो उस हिसाब से आपका फिंगर मूवमेंट होता जाता है, आप लिखते Okay. जाते हो, राइट. सो just a just to take a pause and think, someone who doesn't have the hand, that person is also writing, right? Either they are holding the pen with a with leg or lips. So it's nothing but handwriting. It is actually your brain writing. जो आप लिख Yes. रहे हो वो आपके ब्रेन से आ रहा है. और दैट Yes. इज द थ्रू द न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोपाथवे, न्यूरॉन्स, एंड थ्रू आपके मसल मेमोरी के थ्रू आ रहे हैं. सो नाउ व्हाट Yes. वी आर डूइंग कि ये आप लिख रहे हो, आपका पैटर्न बन चुका है कि आप ऐसे स्ट्रोक लिखोगे, ऐसे अल्फाबेट्स लिखोगे, क्योंकि आपके ब्रेन से वो आ रहा है. नाउ वी आर गाइडिंग यू टू चेंज दैट स्पेसिफिक स्ट्रोक. मतलब आप ऐसे Okay. जा रहे थे हाथ, अब ये हाथ आपको ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो मतलब ये आपका मूवमेंट चेंज हो रहा है, राइट. और ये Okay. मूवमेंट से मसल मेमोरी क्रिएट हो रहा है. द न्यू मसल Okay. मेमोरी इज गेटिंग क्रिएटेड, एंड दैट इज Okay. अगेन गोइंग बैक टू योर ब्रेन. तो ब्रेन में जहाँ के पे जिस जगह पे आपको वो सेंसेशन नहीं हो रहा था पहले, तो वो सब जगह पे वो जाके टच कर रहा है, वो सब जगह पे सेंसेशन क्रिएट हो रहा है. सो द केमिकल्स एंड एवरीथिंग इज गेटिंग released from those part of your brain. So and you are seeing the changes in your behavior और हेल्थ. ये सब वहीं से हो रहा है. मतलब आपके ये ऑनेस्टली हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे वो आप कर रहे हो. ये आपके हाथ है, आपके ब्रेन है. आप सिर्फ, हम सब बता रहे हैं कि आपको हाथ इधर से इधर करना है, उधर से इधर करना है. दैट्स ऑल. इट्स सो सिंपल. और इसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं रवि जी, अमेजिंग लेवल पे. बिहेवियरल एस्पेक्ट पे तो है ही, इमोशनल लेवल पे है, एंड फिजिकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं. तो आई होप आई क्या गेव यू. जैसे अगर आप कुछ बताना चाहें क्या रिजल्ट आ रहे हैं जैसे? ओके.
In the academy, the Global Penmanship Academy, we have multiple case studies on the health aspects, but I will give my personal details. See, आपको मुझे चश्मा दिख रहा है, और Yes. ये मेरा मतलब बहुत पुरानी दोस्त है ये मेरी, ठीक है, Okay. एकदम स्कूल लाइफ की दोस्त है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माय हाई पावर आई ऑलवेज विजिट ऑप्टिशियन रेगुलर बेसिस. तो रिसेंटली मैंने जब ग्राफोथेरेपी शुरू किए थे, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर मुझे पहले सवाल किए कि आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन. आई सेड नो. So then he was looking very surprised and said, "How come your power got so reduced? So much of number got reduced all of a sudden. It was Okay. not something before." Because he was checking me, so the pattern उनको पता है, but ये उनको Okay. अचानक से नंबर कम दिखा. तो अच्छा. उन्होंने बार बार मुझे पूछे कि आप मेडिसिन ले रहे हो कोई? कोई नहीं. हार्मोन मेडिसिन ले रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं. तो बोले नेचुरोपैथी. मैं वो भी नहीं कर रही हूँ, बट मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैं ग्राफोथेरेपी कर रही हूँ. Okay. That helps in my eyesight. Okay. It improved my eyesight. I used to Okay. have a pain on my ankle, जो कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला. Just through graphotherapy. My client had multiple breakthrough on the medical health part. Okay. Spondylitis के पेन 50 to 60% reduced हो गया only 40 days of graphotherapy. Migraine, जो migraine में मेरी client को she used to complain it every month. मतलब ऐसे भी instances है उनके लाइफ में कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा because of migraine. But अभी more than 6 months she is doing the graphotherapy with me. She said, Okay. I can't remember when the last time I had that episode of migraine. तो ये सब Okay. मैं आपको बता रही हूँ. तो So it results in health benefit. It results in physical benefits like eyesight. It results in pain benefit like reduce ankle, जो आपका ankle का pain था वो reduce हो गया. So it results in overall 360-degree comprehensive pain management. and psychosomatic diseases, आप सुने होंगे psychosomatic diseases जो होते हैं, जो Like what? ओके, साइकोसोमैटिक इज समथिंग जो आपके मोस्टली ब्रेन से, मतलब आप समझो माइग्रेन, थायराइड, ये सब ब्रेन से, मतलब आपको एक क्रिएट होता है कि मुझे ये बीमारी हो रहा है, और वो आपका एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आपको वो इंक्रीज होता जाता है. साइकोसोमैटिक, इफ यू सर्च इन गूगल यू विल गेट द गुड डिटेल्स अबाउट दैट. ये साइकोसोमैटिक डिजीज जो है उसमें ग्राफोथेरेपी बहुत ही हेल्पफुल है. Okay. इट मैं ये नहीं बोलूंगी कि कल से डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए प्लीज, मेडिसिन खाना बंद कर दीजिए प्लीज. नो, प्लीज डोंट डू दैट. Because they are medicine practitioner, please go to them, visit them, take your medicines. But along with that, if you do the graphotherapy, आपका मेडिसिन चेक में रहेगा. वो ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा, आपको चेक में रख सकते हो. और जिनको अभी तक हुआ नहीं है, प्लीज हो जाएगा सोच के उसको लेके मत आओ. आप ये ग्राफोथेरेपी आपको वो वाली उधर जाने ही नहीं देगा. बिफोर दैट इट विल गिव Okay. यू द प्रोटेक्शन. या प्रिवेंशन, I would say. Yeah. Okay. So it helps in everything. It helps in comprehensive pain management. It helps in psychosomatic. It helps everything. So why people warming up to this, or people are still hesitant to this? ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपकी. जैसे हम लोग ग्राफोथेरेपी बोलते हैं, तभी Yes. लोगों को लगता है थेरेपी क्यों चाहिए मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं. Yes. थेरेपी किसको चाहिए? द पर्सन विल undergoing lot of pressure, lot of challenges, lot of these that, Yes. then only that person will think that okay, I'm at the burnout stage, I'm going to some other directions, okay, now I need the therapy. No, that's not the case. For me, my case, what I said, that for me everything was going smooth. Okay. There was nothing such challenges, but I still go ahead and started learning, and I realized that it helped me. It helped in my productivity. कि मेरा मेरा जो मैं पूरा दिन भर जो काम कर रही हूँ उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, मेरा टेम्पर मैन कंट्रोल में आया, मेरा एंगर कंट्रोल में आया. तो ये सब क्यों नहीं कर सकते हम? हमारे दिन में हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड, इन दोनों में जो सिंक अगर ना हो, तो हमें डेली लाइफ में चैलेंजेस होते हैं. बट वी आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू दोस इश्यूज.
लाइक हम्म हमारे फोकस एबिलिटी, हमारे हम्म प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, आपका हम्म जो इमोशनल रेजिलेंस जिसको हम बोलते हैं, कि कोई भी सिचुएशन हम्म में आप कैसे पेशेंस रख के आप कैसे हैंडल करोगे, आप एक काम कर हम्म रहे हो फोकस कैसे रहोगे, दो तीन में आप मतलब मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप पागल हो जा रहे हो, ये सारे चीज क्या होता है कि आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल में सिंक नहीं हो रहा है। और ये हम्म सिंक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके लिए मुझे अपने आप को बीमार डिक्लेयर नहीं करना है। हम्म These are the part of my life and I where I can enhance, and that will ease, that will smooth my entire life, day to day life. And the moment it will smooth my life, it will that reaction, that action will be visible in my family life, and सबके सब में आ जाता है। तो ये तो एक चीज है जो आप बोल रहे थे कि लोगों को ये लगता है कि क्यों करना है जब तक ना मुझे बहुत कुछ इशू होगा, बट उस दिन के हम्म लिए क्यों इंतजार कर रहे हो आप? आपके पास कैपेबिलिटीज है कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप डॉक मेडिसिन के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? सो ओके दैट्स ऑब्वियसली माय थॉट प्रोसेस कि उस दिन के पहले ही आप अपने आप के जो पावर है, क्योंकि आपके हम्म पास एंटायर पावर यू हैव, ओके सो यूटिलाइज दैट पावर। ओके या एंड इफ पीपल डोंट वांट टू यूटिलाइज इट, पीपल फील के नहीं यार, दिस इज अगेन, हम इतने सारे कोर्सेज में लगे हुए हैं, हम सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्स में लगे हुए हैं, हम लीडरशिप डेवलपमेंट के कोर्स में लगे हुए हैं, हम फिजिकल को ठीक करना चाहते हैं, हम मेंटल को, हेल्थ को, सबको ठीक करना चाहते हैं। अब एक आपने एक कोर्स और नया जोड़ दिया, ग्राफोथेरेपी। अब कितने कोर्सेज पे फोकस नहीं करेंगे? सर, ये कोर्स नहीं है, ये एकदम भी कोर्स नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है ये कोर्स है, नहीं। और दिस इज द फास्टेस्ट एंड इजिएस्ट मेथड, क्योंकि हमें ओके सिर्फ दिन में एक पेज लिखना है और कुछ नहीं करना है। ओके जस्ट वन पेज इन द मॉर्निंग, दैट्स ऑल। आपको 10 to 15 मिनट्स आपको सुबह आपको देना पड़ेगा अपने लिए, जब आप वो पेज लिखोगे, बिकॉज वी हैव द हम्म बुक। सो आपको उसी हिसाब से जो पेज है डे वन डे टू करके आपको लिखना है, दैट्स ऑल। हम्म और वो एक पेज आपको जो रिजल्ट देगा, आपका जो हम्म से फॉर एग्जांपल प्रोक्रास्टिनेशन, आपके एंगर, आपके हर एक चीज बिहेवियरल थिंग्स चेंज होता जाएगा। हम्म आपका जो कैप एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। तो आप जो काम के लिए अभी समझो आपके पास 4 कोर्सेस है और वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको लग रहा है कि एनर्जी से नहीं हो रहा है, बट रेड और भी हो सकता है। बट आप अगर ये हम्म दिन की शुरुआत ऐसे करोगे, तो आपका वो एनर्जी लेवल पूरा दिन भर रहेगा। तो यू कैन डू मच बेटर, योर प्रोडक्टिविटी विल बी मच मच बेटर इन दैट केस। ओके I have clients in the who are in the corporate world. They said that their productivity throughout the day, कि शाम तक आते आते इतने कॉल्स के बाद भी उन लोगों को वो फील नहीं होता है जो पहले होता था, जो एग्जॉर्शन होता ओके था वो अभी नहीं होता है, क्योंकि दे आर डेली डूइंग इट। अभी उनका ये रहता है कि एक दिन अगर छूट गया ना किसी भी रीजन से, तो लगता है कि आज तो कुछ तो नहीं किए, कुछ तो नहीं किया आज, मतलब ये बहुत हम्म दिल पे लगता है कि ये काम क्यों कैसे हम्म छोड़ दिया। तो हम्म इट विल एक्चुअली हेल्प आपको। इनिशियली लगता है कि ये आपको फिर और एक कमिटमेंट हो गया, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट दैट, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू डू द रिमेनिंग टास्क, रिमेनिंग वर्क थ्रू आउट द डे। Okay. So एंड it means that it's not a blocker, it's a enabler. एग्जैक्टली, Because people feel के अब हम एक और चीज में इनरोल करेंगे, एक और हम चीज करेंगे तो वो हमारे लिए एक और सरदर्द हो जाएगा, हमारे लिए एक और चीजों के अंदर काम करना पड़ेगा, so it will become more of a time consuming task, so they put off that task for the later on, and then they start procrastinating. Okay. ये सर। और So प्रोक्रेस्टिनेशन, guys, अब देखोगे सर, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर होता है, क्यों होता है? कि जो समवेयर वी हैव द सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तभी जाके हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू करते हैं कि आज नहीं करते, बाद में देखेंगे, ये सब। तो ये रूट कॉज क्या है आपके? सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और hmm, ग्राफोथेरेपी ये सारे जगह पे बहुत ही अच्छे काम करते हैं टू इम्प्रूव योर okay. सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू Hmm, गेन द सेल्फ रेस्पेक्ट। तो वो आपको ऐसे रेडी होकर दे दे कि यू कैन डू द रिमेनिंग थिंग्स, यू कैन डू, द प्रोक्रेस्टिनेशन विल ऑटोमेटिकली गो अवे।
because you will gain that confidence within yourself. Okay. Yes. तो यू आर, मुझे तो ये लग रहा है कि ग्राफोथेरेपी इज अ मैजिक साइंस, इज लाइक अलादीन का चिराग, कि आपने उसको रब करा और आपका फिजिकल पेन ठीक हो गया, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक हो गया, आपका आईसाइट ठीक हो गया, आपका यू आर लिविंग अ फुल हेल्दी लाइफ, सो वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। सर, सच्ची में आप जो बोल रहे हो सच्ची में यही हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू बी दिस वन टू वन डिस्कशन के हमारा और मेरा और अर्पिता जी का डिस्कशन चल रहा है। प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क, बिकॉज the reason I am doing it as a live with all the people involved to this only, कि अगर उनका किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कुछ है, then we will take it right now, right? So how to start the process, how people will, if it is so important, and what is the journey, what is the time frame, कितना टाइम इसमें लगता है कि 3 months, 6 months, 12 months, what is the time frame is required? नहीं सर, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अगर आपको 1 महीने के लिए करना है आप 1 महीने के लिए कर सकते हो, अगर आपको ये लाइफ लॉन्ग करना है आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। दैट इज योर चॉइस। आपको चाहिए क्या उस हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा। If Okay. someone just wants to explore and work on some aspects of their life, they can start with the 30 days. But when you are, आपको बहुत कुछ, मतलब आपको अपना पूरा थॉट प्रोसेस, आपका इनर कन्फ्लिक्ट दूर करना है, obviously Hmm. that will not happen within 30 days. Because जो inner conflict, suppose someone is a 45 years old, जो inner conflict उन्हें 40 साल से अपने अंदर लेके चल रहे हैं। You are 45 years old. No, no, I'm just saying, just if someone is Okay. 45. Okay. I thought you don't look like 45 years old. But I'm Sorry. rearing too, huh? Yeah, okay. But still you don't, then you don't look like that you're nearing to 45. That's thank you, sir. Yes, yeah. तो जो जो इतने दिनों से जो कन्फ्लिक्ट है अंदर, I Hmm. will not give you any guarantee that it will be done within 30 days. No, that's not possible. That's not Okay. possible. Hmm. Because ये थेरेपी एक एक के ऊपर एक एक हिसाब से काम करता है। क्योंकि आपके स्ट्रोक और मेरे हैंड राइटिंग के स्ट्रोक सेम नहीं है। आपके Yes, माइंडसेट मेरे माइंडसेट के साथ सेम नहीं है। तब जब yes. मतलब ये स्ट्रोक भी चेंज कर रहे, आपके बॉडी आपके माइंड रेजिस्ट करने वाले हैं इस पे। Hmm. इतने आसानी से आपके बॉडी माइंड जो यूज टू है वो नहीं लेंगे ना, उनको भी तो रेजिस्ट Hmm. करेंगे, राइट? तो अभी रेजिस्टेंस किसके कितना है, एज किसके कितना है, इस हिसाब से ये चलता रहेगा। बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, रवि जी। आई थिंक Yeah, every day morning you brush your teeth, right? yes. How long are you doing it? Yeah. Since childhood. It's Why been are you 40, doing it every 41 day? years. Yeah. Just to maintain the healthy hygiene. Then why not you are doing it for the brain, to maintain the healthy brain? Yeah, absolutely. I'm quite surprised also that this is such an important thing, and people are slowly and slowly warming up to it, and that's why I had done the session, because see, I also wanted to know about graphotherapy more, and this is the way how we can, and like we can in information dissemination के through आप अपना भी self ज्ञान बढ़ा सकते, Right. right? So we have a question from Vishu. Yes. Yes. When we have some subconscious, when we have some subconscious fear on certain aspects in life, how to overcome those? Mostly could be overthinking. Yeah, overthinking you can overcome through graphotherapy. Because your handwriting will I will just take one step back and explain that how we come to the therapy part. Yes. So the first thing involves the handwriting. So the handwriting analysis, as I mentioned earlier, कि सबके अलग अलग handwriting होते हैं क्योंकि हमारे न्यूरो पाथवे से अलग मेमोरी हमारे Yes. थ्रू फिंगर मूवमेंट वी आर राइटिंग। तो ये Yes. हम लोग पहले हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस Hmm. करके हम लोग ट्रेट देखते हैं कि कौन से कितने ट्रेट्स है, क्या क्या ट्रेट्स है। उसमें ओवर Hmm. थिंकिंग भी दिख जाते हैं कि Okay. if someone is in the stress, anxiety, Hmm. overthinking और Hmm. जो भी behavioral issues, behavioral challenges the person is facing, ये सब दिखते हैं। अभी उनके लिए थेरेपी ये होता है कि as I say, the 30 days therapy, we start with the 30 days therapy. और वो 30 days therapy की जो बुक है उसमें हम लोग पैटर्न चेंज करना शुरू करते हैं और Hmm. उसमें धीरे धीरे ये
चेंजेस आना शुरू हो जाता है. Okay. Okay, तो whatever it, if it is a overthinking or it's a anxiety, stress, self confidence, self doubt, everything will come कि इस Okay. बुक में हम लोग चेंज करेंगे. तो इसी प्रोसेस में हम लोग करते रहते, तो इट कैन बी डन. यस, वेरी मच कैन बी डन. Okay. And how to come out of such habits? Sorry, Another question. Vishu, why you which don't come habit? on? Vishu, can you come online and ask the question yourself instead of asking on the chat? Yeah, are you there? Yes. Yes, Ravi, I'm here. Yes. Yes. Okay. So Yes, if sir. you can come on the camera also, then it will be Yes, Yes, better yes, I'm here. because might be your question will help others also. Those people who are watching and those people who are not able to ask the questions, then your live questions will help other people also. So I would suggest instead of me asking your question, you ask your question directly. That's Yes, the whole intention of this जी सर, live. बोलिए. yes. Hi, good evening. Thank you for the Good nice evening. way of explaining things. See, when you're talking about the handwriting part, my handwriting till some years ago, it used to be very clean. I like to actually align the way I write on a book. It has to be very clear, neat. I don't know how it is, but of late, I just scribble it on the book. So is that a pattern that I'm looking at that you can probably infer something with my handwriting? Yes, we can do that, but not now, not here. No, no, So not here, not in this session. So no, if you say that, that no, will be only because uh see, handwriting, analyzing the handwriting will be itself showing you a mirror, and I do not prefer to do it in presence of not in others. public, yes. No, no, I understand. I understand. So you mean to say that if I can get back, what are the reasons for me getting into this kind of handwriting? If I get back to the old ways of writing with clarity, okay, clearly, that is going to declutter my mind and make things much easier for me, or erase off the worries or whatever it is that I'm going through, the disturbances or the ripples that I'm seeing. Will that help? Okay, so Vishnu ji, मुझे अब सुन के ये लग रहा है कि you have already decided that whatever was earlier, that was much better, and whatever is currently, that is not giving a proper vibration to you. इसमें बहुत ज्यादा clutter है, बहुत ज्यादा issues है जो पहले नहीं था. Is it the right I'm I understanding? don't, yes, I don't link it to my handwriting, but yes, on the whole, my feeling is things are a little getting a little confused now. Understood. Understood. Now that you said it could be due because of handwriting. I am trying to connect the dots compared to my handwriting probably a decade back and now. Could that be a reason? It could be or may not be. Until or unless I see your handwriting, I will not be able to comment on that. But I want to say something. There is no good or bad handwriting. It's not good or bad, but the way you are thinking, see, I got your point. Maybe the handwriting what you were referring up to before 10 years ago, maybe that was not a healthy one. Until or unless I see that, I will not be able to comment. oh, So, okay. so it look wise, design wise, style wise, it was looking very neat and clean on the paper. But as a analyst, I will say no. This is, as a therapist, I will say no. This is not a good one. This is not a healthy one. So Oh, the perspective will be different here. So that's why until and unless I look into your handwriting, then I will not be able to comment on that. But yes, it's possible that, see, that is what I was saying at the beginning, that I saw my life journey, because when I understood the strokes pattern and everything, when I compared and I realized, okay, I used to have this is in my school life handwriting, I used to have this pattern in my college life handwriting, that showed me that how I crossed the path and reached here. So that showed my journey, right? So possible, very much possible, but it's a good or bad, I will not comment now. And it could be, and I always says it's a healthy or unhealthy. unhealthy. Okay, I have one point just to add on to that. I'll not take Sure, much time. sure. See, the way I look at is, see, when I'm getting into calls, probably a client call or any other meetings,
I carry two books, even in my office, even now. I just scribble the points quickly on some rough paper or rough book, whatever. And after the meeting is over, I maintain a different book, which I kind of go back and look at a later point of time. So I clearly write the point with clarity in my other book. So is this something that I can reflect from my mindset, where I just scribble off something and again do a fair of that? Is there something that you can help me understand? Okay, my thought process is like this or like this. So you want to be very cautious in this manner, right? That you want to take a short, it's like a shorthand you are taking the notes, and then you are Initially, doing yes. doing a fresh Fair. one with the clarity Yes. part. So Yes. that should give you the reference and the clear picture. So you are being very cautious here, I believe. So is it like I'm being overcautious? No, I will not make it such judgmental comment here, because Okay. I do not read the mind or anything. I only read the Okay. handwriting. Oh, okay. Sure. We can connect maybe offline after Yes, this yes, session. please. Sure. Yes. I'd be happy to help you. Yeah. Yes, sure. Thank you, Arpita. Thank you, Thank you, Vishu. Ravi. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Vishu, for coming. Yeah, Indermohanji, please. Thank you, Ravi, and thank you, Arpita, for such a Thank you, wonderful Indermanji. talk today. My question to you is, as we are raising ourselves or our children, we are exposed to many suggestions from parents to teachers to others Sir, to your voice is a colleagues. little bit coming low. Can Okay, you yeah, put let me your change. hand, like mic थोड़ा पास ला ले. I'm sorry. I'm saying that we are exposed to many people, especially when we are raising ourselves. We have been raised or we are raising our children. And they are exposed to many people, their parents, siblings, teachers, peers, and we have that impact on ourselves. And we don't know which is the right way to write a word, and we are influenced and inspired by other, because such a pattern I'm seeing in my kid also. Maybe my friend is writing like this. I want to write like this one. So, what's your comment about that, and how should we institute things so that they must write clearly? And regarding graphotherapy, yes, being a doctor, and yeah, I am practicing lifestyle medicines, and I do take a note. Yes, you express your thing with your words, your expression through your mind. So that is 100% I resonate with you, and that is a reality. There is no doubt about that. But my whole intention with my question is, if someone had suggested me to write like ए को ऐसे लिखो और मैं वैसे लिख रहा हूं, because someone had taught that to me. So that is an adapted behavior, I think. And how to correct those things? Thank you. Okay. So I will answer this A part first, that you said that adapted behavior. Sir, ये handwriting analysis करने के बाद, it's we discuss with the person that these are the traits, these are the area we can see. There are some good traits, some areas for improvement. So what are the areas for improvement and what are the challenges they are facing? Basis of that only we suggest the strokes. ऐसे नहीं कि मुझे मन में आया चलो ए को बदल देते. अगर आपका ए ऑलरेडी ठीक है, why should I change? I will not change. But for example, you are facing some issues in your life, day to day life, either it would be in your personal thing, in your physical level, or your relationship level, or whatever it is. And then I am suggesting, इंद्रमोहन जी, मुझे लग रहा है कि ये आपको इस एरिया में काम करना चाहिए. If you are willing to do that, then I will say, okay, A change करो, B change करो, C change करो, D change करो, whatever is suitable, I will do that. बट ये नहीं कि मुझे चाहिए कि आपको करके दे दूं, ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट एन अडेप्टिव. सो ऑब्वियसली यू विल always look for an harmonious life, right? So ultimate goal is that. तो जो अच्छा चल रहा है उसको डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे. नाउ आई विल कम टू द चिल्ड्रन पार्ट. ग्राफोथेरेपी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आई वुड से that it works for everyone. 6 to 60, not even 60, till last buried, I would say.
सबके लिए काम करता है। तो वी हैव द प्रोग्राम फॉर 6 years 8 years दैट किड्स स्टूडेंट्स जिनको हम लोग पूरा सिखाते। तो ये जो मैं बात कर रही थी पहले कि वी कैन मेक सो मेनी चेंजेस कि जो अभी अब देखते हैं कि इमोशनल लेवल पे बिहेवियरल लेवल पे हम चेंज कर सकते हैं बड़ों के लिए। दैट इज अ करेक्टिव मेजरमेंट वी कैन डू। बट बच्चों के लिए हम लोग को प्रिवेंटेटिव कर सकते हैं कि वो बच्चा उधर जाए ही ना। उसको कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू मत आने ही मत दो, उसको सेल्फ डाउट पे जाने ही मत दो। उसको पहले से ही वो ठीक तरीके से सिखा देते कि वो उधर ना जाए। So we have the program for the kids also, and that has tremendous result, uh, like other programs. जहाँ पे वो सेम इशू द सेल्फ डाउट का, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बच्चे का फोकस। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा लिखता ही नहीं है आजकल। द मोमेंट क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाए तो नहीं, एक पेज हो गया और नहीं लिखना है, बिकॉज दे हैव द प्रॉब्लम लाइक डिस्ग्राफिया, राइटर्स क्रैम, ये सब इश्यूज आ जाते हैं। और ये सारे इश्यूज इसमें एड्रेस होते हैं, हम लोग करते हैं इसमें। जो हमारा प्रोग्राम है फॉर किड्स स्पेसिफिकली, एंड दैट इज सुटेबल फॉर द स्टूडेंट एज वेल। जो मतलब कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी सुटेबल है, क्योंकि वो लिखना, स्पीड, फॉर्मेशन सब कुछ ठीक करने के लिए। So this is, I hope I have given you the answer what you were looking for, or anything else. I got it. Yes, graphotherapy, its logic and its effects, I 100% resonate that with you. My simple question in that regard is कि if my kid is going to some XYZ school, they prefer by this cursive only, by this graph, by this textbook only, and write your words like this one. Okay. So, and in that thing, maybe from your aspect as a teacher of and as a learned person of the graphology, they might not be the right ones. I got your question. Now, Okay. now for the schools, बच्चे के लिए स्कूल जो बोलेगा वही फाइनल है। Yeah. क्योंकि दे हैव टू गो देयर ओनली, स्टडी एंड लर्न एवरीथिंग देयर। मार्क्स का सवाल है तो बच्चा वही करेगा स्कूल में जैसे सिखाएगा। नाउ स्कूल में यूजुअली दे आस्क फॉर द प्रिंट स्टाइल और द कर्सिव स्टाइल। वी डोंट गो फॉर द कर्सिव और प्रिंट में हम लोग नहीं जाते हैं। हमारा पॉइंट है कि हम अल्फाबेट कैसे लिखना है वो सिखाएंगे। अभी वो अल्फाबेट सिखाने का जो तरीका है उसमें अगर स्कूल का कुछ मतलब वो कर्सिव में, फर्स्ट वी डोंट एनकरेज कर्सिव राइटिंग, नीदर प्रिंट नॉट कर्सिव। सो वहां पे हम लोग जैसे फॉर्मेशन सिखा रहे हैं, वो अगर बच्चे के स्पेसिफिक स्कूल में इशू है तो उसका भी ऑल्टरनेट है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम लोग फोर्स करेंगे नहीं आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो वो चैलेंज फेस नहीं करते बच्चे, क्योंकि इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो ये इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाता है चंद्रमोहन जी। ठीक है, थैंक यू इंद्रमोहन जी, थैंक यू फॉर थैंक यू आस्किंग अ सर। वेरी वैलिड क्वेश्चन and thank you for pointing out this fact. So, Arpita ji, it's a very good engaging discussion. 41 minutes already has been passed, and people are asking so many questions. So what are the next steps? Like, if so, you are saying that it needs to be continuous for lifelong. The graphotherapy needs to be continued for lifelong. Or if someone wants to join, or someone wants to start the thing, then what should be the ideal scenario? 3 months, 6 months? Because I'm asking this question because सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, अगर मुझे भी एनरोल करना होगा तो आई वांट के ठीक है मैं ब्रश डेली करता हूँ, मुझे पता है कि वो हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम खाना डेली खाते हैं, वॉक डेली करते हैं, बट ग्राफोथेरेपी लगता तो है ही ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं। सो व्हाट इज द ऑप्टिमम ड्यूरेशन? 3 months, 6 months, 9 months, 12 months? व्हाट इज द ऑप्टिमम ड्यूरेशन? ओके सर, कोई अगर ऐसा चाहे तो 1 महीने के बाद हमारा 3 महीने का कोर्स रहता है, 1+3, तो ये 4 months कर सकते हैं। सर द मेन इंटेंशन हियर इज I don't want to create a dependency on myself. I Yes. want to empower you. I want to empower your brain to take care of yourself. Your mental, your behavioral, your emotional, your physical, every aspect. तो ये जब आपको लगेगा कि हाँ मैं इधर पहुंच चुका हूँ, प्लीज आई डू नॉट वांट यू टू बी कंटिन्यू विथ मी जस्ट टू, मैं आपको डिपेंडेंट बना के नहीं रखना चाहती हूँ।
तो ये usually it's a 1 to I would say 4 months is the good enough time to for you to learn or how to do that. But as I said, my clients, they're almost 6 months over, but they're still continuing because they know the gain, the benefits they have received. They still want to continue it. So it is up to you how long you want to stay. If you want to stay for a lifelong, I would be happy to support you. If you want to stay for 4 months, 3 months, 1 month, I would be happy to help you. So it's an open thing for yourself. Okay. So on your behalf, I'm posting the link of the free one-to-one clarity session. If Yes, sir. anyone wants to have a free one-to-one clarity session and they want to contact you, then they can fill this form, and people can contact you easily, and then they can start their journey for the graphotherapy, because my whole endeavor is to change your life, transform your life, and चेंज टुवर्ड्स द बेटरमेंट. बिकॉज हम सोचते तो बहुत कुछ है कि करेंगे करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, हम हेल्थ की प्लानिंग करते हैं, हम रिलेशनशिप की प्लानिंग करते हैं, बट हम करते कुछ नहीं है. हम प्लानिंग बहुत करते हैं बट हम करते कुछ नहीं है. सो वी नीड टू टेक एक्शन, एंड वी नीड टू अवॉइड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन कि हम we will do tomorrow, we will do 1 day after, 1 week after, 1 month after. No, whatever we have to do, we have to do right now, whether it is taking charge of your health, wealth or relationship. अगर हमने ये just need to categorize our life into 4 different parts: personal, professional, financial, emotional. And if all these parts are being covered, then you are on a solid footing ground. So anyone has any other question? Anyone has any other doubt or query? So we have just come to the end of our discussion, Arpita ji. If you want to share anything more, like if you want to share any golden nuggets or any case study or any story which has really impacted, which is you would have not see thought कि इस client का ऐसा result आ सकता है, but वो आ गया. सर ऐसे तो बहुत सारे हैं छोटे मोटे, तो बट एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे, तो मैं वो शेयर करती हूँ. द लेडी इज अराउंड 50. तो शी इज अ सिंगल मदर, तो हर सन इज ऑलरेडी ग्रोन अप. तो ऑब्वियसली लोनलीनेस में तो वो थी, एंड दैट्स व्हाई शी ऑलवेज ट्राई टू डू सम और अदर ऑड काइंड ऑफ जॉब्स जहाँ पे वो अपने आप को एंगेज रख सकती है. तो I knew that she had applied for a one kind of job, such jobs, and she messaged me, "Yeah, Arpita, I want to talk to you." And I called her up, and she said, I applied for the job and I appeared for that exam, but I didn't pass. So I was just listening to her, and I was, it's okay, you will get another chance. And then she said, no, no, that's not the point. I want to say there's something different here. I said, yes, please tell me. Then she said, and I didn't pass, and I told myself that I didn't prepare properly, because I had appeared with some young fellows are also there. So I didn't prepare myself for this exam properly. I should have done this. I should have learned this subject. I should have learned this subject. And then I realized in my entire 50 years, this is the first time I'm talking to myself like this. Earlier, whenever I failed, I blame someone else. I blame my parents. I blame my broken marriage. I blame my in-laws, and I blame each and everyone, every circumstances, whoever there. I blamed everyone. I never said I was supposed to do something which I didn't do. This is the first time it is happening with me, and trust me, I am not thinking that I should think like this way, but it is coming automatically, very natural way. And that is the power of graphotherapy, Raviji, that it is a very subtle way it works. The person never took accountability of her life. हर वक्त वो blaming game में ही चला गया, पूरा जिंदगी बीत गई. Yes. Now she realized that accountability कि ये मेरा काम था, मुझे करना था, जो मैंने नहीं किया. तो ये दिस इज अ सेल्फ पावर, राइट. तो ये तभी आता है जब किसी पे कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं कि ठीक है, ये मेरा पावर है.
जो मैं सबको ब्लेम करते जाना, मतलब कि मैं अपना पूरा पावर किसी और के हाथ में देके रखी हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं चल रहा है तब तो। reclaiming your power, reclaiming your life, Exactly. reclaiming your liberty. Exactly. And that is in a very subtle way that she didn't realize that and after she was thinking, then she realized that this is something I'm doing different. Earlier, I never used to do it like this way. So that gave me kind of uh, great happiness that yes, it is a successful thing for her and obviously for me. And it is just 21 days of her writing graphotherapy. This is a incident. So this was a really great breakthrough for me and her, both the situation. Okay. So, friends, I am again insisting you, if anyone has any query, any doubt, any want to know more, want to book a free one-to-one clarity session with Arpita ji, then you can click on the link I have given in the chat box. Also, I have given the link for the 2 free resources. One is for the Step Up SIP calculator, and one is for the free ebook on how to achieve your roadmap to the 5 crore retirement corpus. If anyone has any query, anything related to graphotherapy, or just you want to dispel some confusion, please contact her. uh, she is very eager to help you, and she will be helping you to transform your life totally. Also, अगर आपको कोई भी, if you have any retirement planning query, if you have any confusion related to wealth management, how to, what should be your ideal retirement corpus, what should be your ideal, that how to reverse engineer the figure, that how much you should save in today's term, then I will be more than happy to help you. Because we need to work on many ways. We need to stop our life to live the life on the autopilot. हम सुबह उठते हैं, we go to the office, we come back in the evening, and then we do our dinner, and then we sleep. This is how our life going on. We need to take reclaim, अभी जैसे हमने डिस्कशन करा पिताजी के साथ, we need to reclaim our time, we need to reclaim our life. 9 to 5 आपके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है, एग्रीड. 5 to 9 आपके लिए आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ योर साइड हसल, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट, वट एवर यू आर डूइंग. चाहे आप 1 घंटा करिए, चाहे मेडिटेशन करिए, चाहे कुछ भी करिए, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, right? So I hope all of you has got tremendous value from this session. Any final comments, Arpita ji? 30 seconds. Yeah. So if you are still searching for the peace, confidence, and then please check yourself. You have all the power within you. The answer is within you. And I will be happy to help you on this journey. Please get in touch. Thank you. Yes, please get in touch. She's a very humble personality, and whatever the interaction we had right now and earlier also, we had met at an event, and we was able to interact little bit, and I was who totally got mesmerized by her humbleness and by her politeness. So please, if anyone has any query, anything, please contact, and will I hope all your queries and confusion has been answered. And thanks for attending this session. Thanks. Let's take a pic. If Sure. all can come on the camera, then it will be wonderful. Yeah, let's take a pic. So, thank you so much. Yes. 1, 2, 3. Yes. Okay. Thank you so Thank much. you. Thank you, Ji. Okay, we'll meet again in another session, and I hope this session we will meet another in with the next new series of guests, with a new series of wonderful guests involved, and my whole endeavor is to bring so much of energy, information, transformation to your life that you feel empowered and you are ready to